नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत तक और ये इस वक्त जहां बैठे हैं वो है FA-18E का वो कॉकपिट जहां पर बैठकर हम ये अनुभव कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से ये पूरा ये जो फाइटर जेट है वो काम करता है, ऑपरेट करता है। मेरे सामने स्क्रीन है और बिल्कुल ये एक कह सकते हैं कि असल फाइटर जेट की तरह है जहां पर कोई व्यक्ति यहां बैठकर इसको फ्लाई कर सकता है, यहां पर वो एक्सपीरियंस कर सकता है इसकी उड़ान को, लैंडिंग कर सकता है और ये तमाम चीज़ें जैसे ये काम करता है। क्योंकि आपको बता दें कि इंडियन नेवी के सामने FA-18 जो है वो राफेल हो या फिर ऐसे कई फाइटर जेट्स हैं जो इस वक्त कम्पीट कर रहे हैं कि किसको नौसेना में शामिल किया जाए। तो इसलिए हमारे साथ क्रिस हैं, क्रिस बोइंग से हैं। क्रिस, टेल मी वन थिंग कि what all this mean actually and how it works. Absolutely. So right now you're looking at everything you need to know to fly. Currently this large screen is new to the F-18 Block 3. It's what we're offering the Indian Navy. It allows us to do some cool things like rearrange the cockpit as we see fit, show and hide displays we don't need, Exactly. make certain displays bigger, or put up more displays depending on what we're doing. So it's very flexible. In addition, this new display is lighter and uses less power. It's much easier to maintain and a lot cheaper to build. So we believe it is a great improvement over the Hornet. What you're looking at now are your radar displays. This aircraft has an AESA radar, which means it can do both air-to-air and air-to-ground at the same time. So we have air-to-air targets while we're monitoring the air-to-ground situation. So we can put that together and absolutely, correct. Eight targets you can engage. So you can shoot air targets while you are bombing ground targets. In addition, some of the stuff we're looking at for the future is taking our two-dimensional displays and putting them together in 3D. So here's the same information, but presented in a lot more clear manner. So instead of numbers and symbols, you have a picture. यानी कि अगर आपके पीछे दुश्मन है तो यहाँ पर इंडिकेशन तो होगा ही, साथ ही साथ आप उसको रियल टाइम में देख पाएंगे कि आखिर वो जो है इस वक्त कहाँ है और ये बिल्कुल 3D इमेज होगी। इसके अलावा आप एक साथ ग्राउंड के अपने दुश्मन के साथ साथ हवा में जो दुश्मन है उसको भी आप इंगेज कर सकते हैं और यहाँ पर बिल्कुल 3D व्यू मिलता है। एक और चीज़ जो खास बात है, क्योंकि हमने देखा है कि FA-18 की शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग को लेकर जो है बात होती थी। इट इज़ अबाउट शॉर्ट टेक ऑफ, लैंडिंग। Absolutely. So we were in Goa about 3 months ago doing tests on the ramp. So it was about a 200-meter run-up from start to takeoff point with a rather impressive loadout. So right now you're carrying a little bit more than they were on the ramp, but quite a bit of weaponry for that short takeoff. For landing, we have a hook system that catches a wire. As is currently on the two Indian carriers. So that's how we stop very shortly. So इसमें एक और ख़ास बात है कि इसमें 2 वर्जन हैं। E वाले में एक व्यक्ति बैठकर इसको उड़ाएगा और F वाले वर्जन में 2 व्यक्ति एक साथ बैठ पाएंगे और इसकी शॉर्ट टेक ऑफ लैंडिंग की हम बात कर रहे थे, वो भी इसको खास बनाता है और इसी आइडिया को हमने देखा कि बोइंग ने इंडियन नेवी के सामने पिच किया। मेरा एक आखिरी सवाल, माई लास्ट क्वेश्चन इज़ कि हाउ इट विल कम्पीट विथ राफेल? So we believe we have several advantages. Number one, the sheer quantity of aircraft out there right now. There are over 800 of these airframes operating between the U.S. Navy, the Australian Air Force, the Kuwait Air Force. They've been out there a long time. We know a lot about them. We have a lot of data. We know how to maintain them. We know how to build them. And just the sheer scale of the operation is going to pay off long-term savings and confidence in operation for the Indian Navy. In addition, we're still making it better. So this Block 3 came about within the last 5 years. We're going to be flying them in the United States through at least 2040, and we're continuing to develop the platform. For example, one of the things we're looking at is manned-unmanned teaming. So how a person in the cockpit can take control of a UAV and potentially give it a command. So I've told that UAV to go to that spot, and now I can actually bring up video from that aircraft. So I can use that remote UAV as an additional sensor for me. So again, the jet is only getting younger. We are keep advancing.
सो कुल मिलाकर ये हमें ये बता रहे थे कि इस विमान के साथ एक यूएवी को यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल को भी कनेक्ट करके उससे कमांड यहाँ से किया जा सकता है और ये चीज़ इसे और भी खास बनाती है। जो सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त वो यही है कि आखिर ये जो डील है वो किसके हाथ में जाएगी, किसको ये डील मिलने वाली है। व्हाट इफ यू विल क्रैक द डील? आर दिस F-18 Super Hornet will be manufactured in India? That I don't actually know personally. I can get you in touch with a person who does know that. But certainly there will be offset opportunities. This is not a complete U.S. product. चलिए फिलहाल अगर देखिए इसका हम इंटरफेस की बात करें तो ये वो इंटरफेस है जहाँ से कोई भी जो है जो पायलट है वो ऑपरेट करता है फाइटर जेट को, और आप सामने एल्टीट्यूड देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। ये बिल्कुल एक रियल फाइटर जेट की तरह है। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं ऊपर की तरफ जॉस्टिक कर रहा हूं तो प्लेन जो है ऊपर की तरफ जा रहा है और ये कॉकपिट बिल्कुल वही फील दे रहा है। और